Uh, First, my thanks goes to the entire Vyapar Jagat team. I've seen how Praveen is growing leaps and bounds day by day with his consistency, persistence, and passion. Now, coming to today's panel discussion, the title is very interesting. आज का जो टाइटल है जब आप पढ़ पा रहे हो सस्टेनेबिलिटी इन एक्शन. बातें तो हम बहुत कुछ करते हैं, हम एक्शन की आज बात करेंगे बिकॉज सस्टेनेबिलिटी की बात इतने टाइम से हो रही है. सो अवेयरनेस इज देयर, education to some extent is there, but now to convert awareness education into action, जो LASI उन्होंने बताया, LASI talk. The LASI stands for learning. Once you learn, you need to act. When you act, you need to share, and when you share, you inspire. That's LASI stands for. So coming to my first very close friend of mine, I would like, it's such a pleasure to introduce Mr. Madhu Menon. Madhu, I started with calling him Madhu ji, Madhu Menon ji, and I love to call him Madhu now because the kind of honey he is in its own self. He is an educator, communicator, specializing in the fields of development and environment. He produces educational and motivational video programs for a number of non-governmental agencies. Worked with prestigious institutions like NID, EMMRC and ISRO. He is one of the 3 promoters and presently director of Anala Outdoors. अगर अनाला में जाने के लिए कभी बहुत ज़्यादा पैक होते हैं तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं. अभी तक मैंने मधु जी को रेफरेंस अपना दिया नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि मेरा रेफरेंस दे देना, आपको जगह मिल जाएगी. Madhu has been recognized by the United Nations Universal Peace Federation as their ambassador for peace. He was recently awarded by CMS Vatavaran, New Delhi, for his environmental concerns and endeavors at National Institute of Design. A PhD scholar in environment communication, holds a master degree in development communication, postgraduate program in environment and ecology, bachelor's degree in science. A good round of applause for our friend Madhu Menon. May I request now Mahesh Pandya ji. See, Ahmedabad first, huh? Please don't mind. Mahesh Pandya ji. He is also a very well-known name. He is a director of Paryavaran Mitra, environmental engineer, editor of bi-monthly Gujarat magazine Paryavaran Mitra since 1998, member of Waste Management Committee, Government of Gujarat, observer at UNFC, and observer at UNEP, special consultative status at UN EcoScope. Visiting faculty at various universities like Nirma University, Gujarat Vidyapit, School of Law, Gujarat University. I have with us a very charming personality, Vineet Khanna ji. He has just come to Ahmedabad from Srinagar via Delhi. So this needs a very big round of applause. We just met yesterday on WhatsApp and today here, but just we feel all connected. Because, you know, the greenpreneur is the connect between all of us, which bonds all of us together. He is from Kanpur, coincidentally he was born with the help of Dr. Lakshmi Sehgal, who has been close to Subhash Chandra Bose. So we can see that independent soul in him, which lives through the past 56 years in his own inimitable, free manner. St. Xavier's School and his grandparents' liberal upbringing only brought out the fiercely creative, independent streak even further. The School of Planning and Architecture, New Delhi, an institution best known for fostering lateral thinking, was just the launch pad this passionate being needed to create. Green homes, museums, hospitals, resorts, data centers, school, colleges, universities, township, bus terminals, railway stations, and even airports. When its young Shivani happened to him in 1998 and to this date remains his best client. On weekends, they like to chill from their, and entertain from their Design Green Center near Palam Vihar, Gurgaon. Nature has been the best element in the design of this home. The thought was to make the existing environment quite participative by using the elements present locally. See, I'm taking little time to introduce all of them because
to cut short the introduction is more like cut shorting the entire journey, and his presentation here on the stage. So it's very important to know the speakers first, their background, their liking, their passion, and then only we can connect with what they are going to speak. I would like to introduce a very handsome, dynamic principal architect, director, Kavi Jain, please. He's here from Delhi with us. A visionary. We need a road. See, Ahmedabad. See, I introduce Ahmedabadis first, so that we have enough energy to clap for the people who have really come to Ahmedabad. Thank you, Vivek and Kavi. Thank you so much. Kavi completed his BR from IIT Roorkee in 1988. He is a visionary who followed his own path to explore previously uncharted terrain in 1990. He set up a Nirman consultant. Please Google, you'll really enjoy the work which both of them have done as an architect. And this Nirman consultant, the company developed into a world-class, single-window, total project management consultancy. With his passion for architecture and creative thought process, he inspires his team to produce path-breaking designs that have won awards and accolades nationally and globally. He laid the foundation of a responsible corporate culture in India with a trend of sustainable and environment-friendly office buildings. Trained by his acumen for creativity and aesthetics, Team Nirman excels in out-of-the-box design concepts. So today we are going to discuss about sustainability in action, a 360-degree perspective under this title, and I'll be asking a lot of things to all four of them. And please, this is going to be interesting because in between also, if you have any questions, you can raise your hand. Let's make it two-way process, and we can also ask something about whatever is there. That's that Kida among us. Let's start that Kida thinking and let that Kida come out so that the lateral thinking and out of the box thinking is presented really well on the stage today. See, sustainability is always there. The anchor very nicely talked about reuse, reduce and recycle. Recycle is always behind, always third, not the first. But before that, the first comes is refuse. Refuse. Before you reduce, you refuse. Whether you need it or not. Think about it. वो दिमाग में जो कीड़ा है उसको सोचने दो कि इसकी क्या मुझे वाकई में जरूरत है, तो आएगा रिफ्यूज. तब जाके बात आएगी रिड्यूस. तब जाके बात आएगी रिसाइकल. से ज्यादा आजकल क्या हो गया पता है, रिसाइकल. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन एक्शन, बिकॉज रिसाइकल के नाम पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हम खुद यूज नहीं करते. आप देखो स्कूल में, अगर आपके मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल में होंगे तो एक कॉम्पिटिशन होती है रिसाइकल प्रोडक्ट बनाना. तो 2 चीज घर से आती है, 4 चीज बाजार से आती है, और एक ऐसा टेबल लैम्प बनाया जाता है जो घर में भी यूज नहीं होता. सो क्वेश्चन एक है, लेट्स टॉक अबाउट अपसाइकल. एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो वैल्यू एडिशन करे. एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो रिफर्बिश हो, रीपर्पस्ड हो, उसका पर्पस चेंज कर दिया जाए. इफ यू कम टू बोहो होम्स, माई स्टोर विच इज देयर ऑन एसपी रिंग रोड, यू विल फाइंड reclaimed. We reclaim the raw materials. So reclaimed wood, जो wood आप फेंक देते हो उसको हम reclaim करके ऐसा फर्नीचर बनाते हैं जो आप अच्छे खासे पैसे देके घर में लेकर आओगे. और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप नहीं, आपके सब जनरेशन उस वुड को संभालेंगे. And it will never end the landfill. So let's refuse so that the things don't enter the landfill. So आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से, इवन विनीत विल बी टॉकिंग अबाउट इस लैटरल इकोनॉमी के बदले सर्कुलर इकोनॉमी की जो हमारी बात हो रही थी. आई थिंक ही मेंशन 360 डिग्री पर्सपेक्टिव. जहाँ से आया उसको 360 डिग्री इस तरह नज़र से हमारे प्रोडक्ट को देखा जाए. रिफर्बिश करो, रीपर्पस करो. So that's what we are going to talk about today. So my first question, because it comes to education, it starts with education, and we have a naturalist of environment. Madhu को हमारा सबसे पहले question होगा because he was the first one to respond on WhatsApp.
See, I'm being very clear. I have logic behind what I'm doing. So all my four speakers don't feel that I'm being biased. We just met. So first to Madhuji is, I just asked him yesterday, may I take a liberty to on the power of possibility. Possibility for action-based possibility. How can we engage masses to connect with our green planet, understand it, appreciate it? Its immense resources are there. How do we use it responsibly and then hand over to the next generation? Madhuji. Yes, please. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू कृतिका। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो मैं बिल्कुल एक छोटा सा गांव में रहता हूँ, जहाँ पे हमारा पेरेंट्स का लिविंग था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं था, सस्टेनेबल लिविंग पे था, क्योंकि आसपास के हमारे पास में अभी ठीक सुनाई दे रहा है? ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल एक गांव से हूँ। उस गांव में हमारी नदी अपनी नदी थी और आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे में पक्षियाँ। और मेरे पेरेंट्स सस्टेनेबल लिविंग करते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट सुनाई नहीं देता था उस टाइम में। तो हमारे पास तो हमारे लिए जो भी चाहिए था आसपास में था, सिर्फ मसाला के अलावा। तो हमें शहर में तभी जाते थे जब मसाला की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह सस्टेनेबल लिविंग से बड़ा होके जब हमने बड़ा हुआ तो डेवलपमेंट की बात सुनने लगे, एंड पीपल गॉट इनटू डेवलपमेंट एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हम मानते हैं कि दिस जनरेशन शुड हैंड ओवर दी ओनली अर्थ। देखिए अभी भी आपको मानना ही पड़ेगा, देयर इज ओनली वन अर्थ। आमिर खान शायद आपको बताने का कोशिश करेंगे कि नहीं और भी लोग हैं, लेकिन नहीं है। मेरा साइंस जितना मैं जानता हूँ तब तक एलियंस फिक्शन है, पृथ्वी पर ही लाइफ है। दिस इज द ओनली प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, वेयर इन लाइफ इज सस्टेनिंग। एंड ये जो सस्टेन इसलिए हो रहा है कि अपने पास वायु है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य के किरणें हैं और अपने सब के लिए जगह है, जिसको एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड द स्पेस आप समझा सकते थे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हमको कहते थे कि पंच महातत्व, उससे रहो, उसी में से है, उसी में जानना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे लोग इसको पूछते थे, उसको रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन एक जनरेशन ऐसा हुआ कि इनका पूरा कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की तरफ गया और डेवलपमेंट की तरफ गए साथ साथ हम उसी तत्वों से बहुत दूर चले गए। We got alienated. In fact, one full generation got alienated from the very basic elements of nature by which we live and die. And the education was a requirement to tell people that no, you can't live without air even for 5 minutes. You can't live for a week more without the water. And there's no chance that you can live ever without food. And the food happens. We teach the photosynthesis in the class 3 and 4 now, but we don't really appreciate all things happens because of the sun, which our ancestors did. अगर sun ना हो तो photosynthesis नहीं होता है. Photo itself is directly connected to sun. And if people respected it knowingly, सूर्य की वजह से सब कुछ है, उसमें कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए। अगर कोई सुबह उठ के बस कराए नमाज है, उसमें अगर समझकर अपने बच्चे ये समझकर कहे कि वो सन है, स्टार है, तारा है, वो समझकर साथ आप उसको साथ ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मिट्टी के साथ बच्चे नहीं खेल रहे तो क्रिएटिव बनने का कोई चांसेस नहीं। जो बच्चे के हाथ में मिट्टी ना रहे, लेकिन आज हम अनफॉर्चुनेटली बच्चों को कहते हैं मिट्टी लेके अच्छी, मिट्टी को अच्छी कहते हैं और हम अपना धर्म अपने को समझाने का कोशिश करते हैं, इसी मिट्टी से तू है, इसी मिट्टी में तुम वापस है। कहना आसान है,
लेकिन वो मिट्टी को आप हाथ में होने नहीं देते। तो मेरा और हमारा कोशिश हो है कि नहीं, हम मिट्टी के साथ लोगों को वापस ले जाना चाहते हैं और सही जो पोल्यूशन ना हो ऐसी जगह पे लोगों को वायु के साथ कनेक्ट करते हैं। पानी, देखिए पानी के पूरा हमारा सिविलाइजेशन, लोगेंद्र जी ने बताया था कि हमारा बहुत पुराने हिस्ट्री है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, इंडस इज a river on which we all started our journey. We all are sitting in Ahmedabad because we had a beautiful Sabarmati, change my language, because हमारे पास एक बढ़िया सा नदी थी। अभी नहीं, अभी सबरमती बोरआउट वाटर से चलाते हैं, वो भी पर्यावरण को बहुत नुकसान करके बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के वो पानी को सबरमती में डाल के आपको रिवर फ्रंट बना के दिए हैं, लेकिन आप हाथ पकड़ के वहाँ पे बैठ नहीं सकते, वो अलग इशू है, उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन इसी के साथ हमारा कनेक्टिविटी चलेगी। सो अनलेस अंटिल वी रीस्टार्ट द कनेक्टिविटी विद दीज बेसिक एलिमेंट्स, उसको प्रोटेक्ट करने की बात ही नहीं होता है। अगर आप मुझे जानते ही नहीं तो मुझे मेरे प्रति आपको क्या मतलब प्रेम या कोई भी भावना हो। सो ये बहुत ही जरूरी है, इस तत्वों के साथ हमें रहना है, उनके साथ अपने को टाइम निकालना है और रिकनेक्ट कर किसी को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। सो ये कोशिश है हमारा। So now coming to this choices that we make for our own self, because day by day we are purchasing things that are leaving our ecological footprints everywhere. And मतलब एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट होता है, वो सेज अच्छा तो मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो टीचर को लगता है कि नहीं अब उसको पूछ लेते हैं। सो लेट मी आस्क विनीत खन्ना जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिकनेक्टिंग विद द नेचर एंड आई एम श्योर दिस रिकनेक्टिंग कनेक्ट्स विद आवर कंज्यूमरिज्म अप्रोच। द मोर वी आर कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ दिस, ये मोबाइल की हमें लाइफ में कभी जरूरत नहीं थी। I have been telling people that this is my parents' generation and my generation who has spoiled the earth. My grandparents used to live a wonderful life and the planet was really nice at that time. ये हम 2 जनरेशन में ही सत्यानाश किया है, और सत्यानाश कैसा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको भी हमारे दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इट बिकम्स अवर लाइफ लाइन। जरूरत थी नहीं, जरूरत थी, इतने साल जिए। सो कंज्यूमरिज्म, और जरूरत भी कैसी, लेटेस्ट पॉइंट 1 और एक कैमरा का पॉइंट ऐड हो गया था ना, हम कभी जिंदगी में यूज नहीं करने वाले, लेकिन खरीदना तो वही है जाके बाजार में। सो कमिंग टू कंज्यूमरिज्म, आवर ग्रीड, विनीत जी कैन यू प्लीज ऐड सम पॉइंट्स ऑन दैट? Thank you all. Am I audible? Yes. First of all, thanks to the. I'm sorry I asked the neighboring classmate who raised the hand. But yes, this connected with consumerism and we thought we'll discuss on this. So let me ask Vinit ji about it. Yeah, so I should use less time, less flexibility. So that won't increase the carbon footprint. I was saying to Dr. Parmar, जैसे मधु जी ने बोला, लोकेंद्र जी ने बोला कि next time एक award आप रखिएगा the most polluted city in the world का, most polluted city in India का, दिल्ली और अहमदाबाद में competition strong रहेगा, पर I hope वो award ना लेने आए, मधु जी अहमदाबाद से ना लेने आए, मैं दिल्ली से ना लेने आऊँ। तो मधु जी ने बहुत अच्छी चीजें बोली, मैं उसी पे ही बोलूँगा। ऑफ कोर्स उन्होंने भगवान बोला, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जो 5 तत्व हैं, वो बहुत अच्छी बात बोली, एंड दैट इज द बेसिक थिंग। बट व्हेन यू से गॉड, then there is God created this earth with those elements. So thank you for reminding us that God is earth and earth is God. So if we pray to God, so we can pray to earth as well, which we are not. So thank you, Madhu ji, for re-establishing that. Of course, I've been assigned with the question of consumerism. You see, body, when we look at a body, it heals. It doesn't consume, it heals. आपको चोट लगती है तो heal होती है। ये नहीं कि आपको चोट लगी तो आपका हाथ काट के नया हाथ लगता है। So this is what we have to do with our consumerism attitudes. As Lokendra ji said, it starts with the family. I studied in St. Xavier's School, Delhi, designed by a very good architect, Mr. Kanbende.
There were no ACs. Those were the best years of my life. I used to perspire. Now I sit in AC rooms where I put on weight. So I would say we should switch off the ACs here and have a conference, Dr. Parmarji, if you give the permission. So it is जैसे ये phone है इसको use करें ना करें. I feel this phone is a beautiful thing. Plastic is a beautiful thing because in surgery you need plastic. For in the aeroplanes you need the plastic plumbing systems. So no invention is wrong, but it has to be appropriately used. If I have a car which is running for 10 years, I don't need to throw it. If the Green Tribunal says that the engine has to be B6 compliant, so just the engine should be changed. So what is happening is that sir is saying कि Pepsi अपना Pepsi बेच रही है, गाड़ी वाले अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और जो Pepsi और गाड़ी वालों ने पूरी ग्रीन ट्रिब्यूनल को पता नहीं I hope I won't get caught कोई पुलिस वाला तो नहीं आया यहाँ पर तो I mean खरीद लिया है या क्या कर रहा है I don't know. हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम खरीदते जा रहे हैं. नहीं हमने तो ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही खरीद लिया है. So there must be really as it has to start from the family, as it has to start from, we have to get that assertion from the government that you cannot force consumerism. I mean, we have cars in Delhi, which a 10-year diesel car, which keeps spending money. I mean, people like us maybe can buy more cars, but then for a driver who's taking a thing in installments, that kind of forcing consumerism is not the right approach. I feel at times, Vinitji, it's about producers pay principle also. I like it has to go back and has to be reused, recycled, the parts which can be recycled, which can be reused, can be redesigned. That also should be a part of the entire green economy, rather than just forcing one side. So when you buy a new car, the carbon footprint that it eventually takes, I was sitting with a mechanical engineer in my flight and he said, yes, the carbon footprint of a new car and then scrapping the old car and then doing with the scrap is like nowhere in the world. I had my last holiday in Jordan, there were Mercedes 40 years running. And India is a country where the car workshop people, that is the employment, not the new industry employment. Products have to be made for lasting, and we should use the product in the end of its life, rather than just in the middle. And just because we want something new, it has to some new technology, the product has to be made in such a way that they are robust and they last for life. Vinit, we would like to add something. Before I pass it to Kavi, I'll just say we had phenomenal things like we built the rock garden in Chandigarh. Okay. And after that, where we used all the waste material, Nekchand did a fantastic job. Antonio Gaudi did a fantastic job in Spain with all the broken tiles. And that park is a tourist spot. He's used all the waste tiles. So I don't understand where is the Kabadi Bazaar got. Why is the Kabadi Bazaar not coming forward? Over to Kavi. Yeah, Kavi would like to Yeah, add. I would like to add to what you just said that no invention is wrong because unless it makes human sense, it makes economic sense. Imagine how much of paper you've saved by using this particular mobile. You Google something, पहले आप library जाते थे, there was so the library, the e-library exists here in your hand. The next greenpreneur, I would probably have this magazine in an e-format, not on paper. So, because that's also a wastage of paper, but everything we get on the mobile. So everything that we do today will make sense. And as Vinit said, that the newer car will definitely be much more fuel efficient. It will be much more greener than the previous car, which is probably not, the way technologies are going, the obsolescence technologies is become very fast. जब कोई भी चीज़ होती है उसका शुरू में थोड़ा सा ग्राफ काफी horizontal रहता है, लेकिन once it picks up, then the graph actually shoots up. So I would say that consumerism definitely there's a good and a bad part of it. But yes, there are certain things where markets are created out of nothing.
RO is a classic example. मैं बचपन में हम जाते थे, ट्रेन में जाते थे, जब छोटे थे बच्चे थे, कोई भी नल होता था उसमें से पानी पी लेते थे। और हमारे बच्चे जो हैं आज की डेट में वो नहीं कर पाते हैं। So I think it starts with the family. And believe me, whatever kind of water you drink, the bottled water is actually the worst. This is what I feel. I'm sure that most of the great leaders sitting here may agree. The bottled water is actually the biggest problem for health, for human consumption, because it's got nothing. So I would just end it at that, and we will continue on some other topic. Yeah. Thank you so much, Kavi. Mahesh bhai, what would Gandhiji feel about today's the way we are into, because we are into Gandhian philosophy. So the way the today world is going on and the way the Gandhiji laid stone when it came to independent India, what is sustainability as per the Gandhian philosophy, and would it be happy or crying or just neutral કે જે થાય તે થવા દો ને મારું શું? નમસ્તે અને પ્રવીણભાઈને આપ સૌનો આભાર કે આમંત્રણ આપ્યું અને પેનલમાં તક આપી. I'm going to speak in Hindi because of the people from Delhi and all. So otherwise I love to speak in Gujarati, but okay. નેશનલ મીટ છે એટલે आज भी आज भी गुजराती मोर सस्टेनेबल, हिंदी मोर सस्टेनेबल. आज भी गांधी प्रस्तुत है. मैं बोलता हूँ कि मैं यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर हूँ क्लाइमेट चेंज में, और हर एक ट्रीटी में मैं जाता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यदि गांधी प्रिंसिपल पे जो आप काम करोगे तो मैं बोलोगे पेरिस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दो, जो लोपेंद्र साहब ने भी बताया, थोड़ा बहुत इसका संबंध वो था कि ये जरूरत नहीं है पेरिस एग्रीमेंट की. गांधी ने क्या बोला, जो मधुम साहब बोल रहे थे कि इतनी सुंदर हमको नदी दी है. When he was staying on the bank of the river in 1930, Gandhi living here, वो एक बाल्टी से पानी से नहाता था. एक लोटा को क्या बोलता है, I don't know in हिंदी, लेकिन उससे वो अपना दातुन करता था. बोलता था कि ये पानी सिर्फ मेरे लिए नहीं है. बोलते कि आप कंजूस हो, आप नदी में जाके नहाओ. बोले नहीं, मैं नदी को गंदी क्यों करूं, सबके लिए है. यदि ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते तो आज ये गांधी ने दूसरी भी बात की कि ये जब हाथ धोने की बात आई तो उसका सेक्रेटरी महादेव देसाई ने वो मुट्ठी भर के मिट्टी उठाई नदी की रिवर बेड, सैंड रिवर. बोला कि यार आप क्या कर रहे हो, इतनी जरूरत थी ये मट्टी लेने की. ये उसका आत्मा है, वो उसका हार्ट है, वो जो सैंड है वो. आज देखो कि इतना सैंड माइनिंग हो रहा है इलीगल, पूरी नदियां सूख गई क्योंकि जो पर्कोलेशन होना था वो नहीं हो रहा है. और फ्लड आता है तो पानी रन ऑफ हो जाता है, दरिया में बह जाता है. तो ये भी हो गया. गांधी मऊ मानते थे, गांधी ऐसा नहीं मानते थे कि हम विकास ना करें. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल वर्ड ही मुझे बहुत पसंद नहीं है. डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट. वो सस्टेनेबल क्या होता है, हम कुछ छिपा रहे हैं इसीलिए हम छुपाने के लिए, बचने के लिए हम सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं. मतलब कि डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट यार, सबके लिए विकास हो तो वो ही हो शब्द. तो सस्टेनेबल क्यों लगाते हो, क्योंकि हम कुछ चोरी कर रहे हैं. वी आर नॉट प्योर इन हार्ट. ये गांधी ये नहीं बोलते थे कि विकास नहीं होना चाहिए, और तरीका काफी था. जैसे कि गांधी ने क्या बोला कि ये जो मधु साहब ने बात की, सबने बात की कि भी ये 5 एलिमेंट है वो लिमिटेड है. वी हैव टू मिनिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. लेकिन आज लाल किला पर से क्या बोला जाता है, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी हैव टू मेक ए ऑप्टिमम यूज ऑफ इट. नॉर्थ ईस्ट जो बाकी रहा है उसका भी हम विकास कर लेंगे. मतलब क्या है इसका यार. अभी पॉलिटिक्स पे की बात की, अब तो ये हुआ है कि पे एंड पॉल्यूट. रिवर्स हो गया है. एग्जैक्टली. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी जो करोड़ 100 रुपीस का पेनल्टी लगा रहा है, तो मैं तो यार 10 गुना देने को तैयार हूं. If they are allowed to do me the pollution, I am ready to give the 10 times more than the whatever the NGT give me the penalty. ये बात है. तो ये जो हम सीखे इसमें से
साहब ने अच्छा बोला कि कोई इन्वेंशन होता है, शोध होता है, वो गलत नहीं होता है, किस प्रकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूरी है। तो उस प्रकार का जो इस्तेमाल करो, एटम बम का उपयोग नागासाकी हिरोशिमा में हो सकता है और अच्छे लिए भी हो सकता है। तो गांधीयन फिलोसॉफी वो थी कि अपनी जरूरत के मुताबिक आप यूज करो। कोई एक रूम रसोड़ा में रहता है, उसमें घर पे कचरा नहीं होगा। हमारा खाने का बचा हुआ हम फुटपाथ पे लोगों को देते हैं, उसमें डस्टबिन नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। जिसके पास ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एवरी ईयर वी हैव टू चेंज द मोबाइल। और हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो रूल्स है उसका इस्तेमाल तो हम नहीं करते हैं। 10% भी ई वेस्ट रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। 5% भी प्लास्टिक रूल्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी जो डेब्रिस गिरी, जो हमने तालियां बजाई, बहुत तालियां बजाई दिल्ली में, जो ट्विन टावर टूटा तो बहुत तालियां बजाई, लेकिन 80,000 टन का जो वेस्टेज हुआ, वेयर वी हैव टू डन एंड व्हाट अबाउट द पॉल्यूशन। और अभी तो अभी एक नया कानून आने वाला है, प्रपोजल रख दी है, हमने कमेंट भी किए, इम्प्रिजनमेंट शब्द निकाल दिया गया है कि उद्योग लोग घबराते हैं कानून से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो इसमें बदलाव आया, अभी प्रपोजल रख दी है कि भाई इम्प्रिजनमेंट निकाल दो, पेनल्टी दे दो। अरे यार, कानून तो इसीलिए बनते हैं कि बीक लगे, उसको डर रहे, उसको स्कैर रहे, इसीलिए कानून का बात। लेकिन अब ये हो रहा है, आप अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हो, अभी बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूरा डाइल्यूट कर दिया, और जो शेयरिंग की बात थी वो निकल गई। अब तो परदेश से भी लोग आके हमारी बायोडाइवर्सिटी का यूज करेंगे। तो ये जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वो सोचने की बहुत आवश्यकता है। प्रवीण भाई की जो अभी जो कर रहे हैं, मैं एप्रिशिएट, बहुत जरूरत है इसकी, बहुत गुनी जरूरत है उसकी, इस सब चीजों की। तो आज भी आपकी बात पे गीतिका बहन आ जाओ, गांधी आज भी प्रस्तुत है। और गांधी का जो सूत्र था, माई विलेज माई यूनिवर्स, इज टुडे स्टैंड बाय। और गांधी ने जो प्रतीक जो दिए हैं, चरखा और झाड़ू, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच। मुझे जाना है तो मैं निकलूंगा। थैंक यू सो मच महेश भाई फॉर यू। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग सब बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। We'll finish the formality of giving him the memento. Yes, please. मुझे एक मीटिंग है, इसलिए जाना है। अदरवाइज तो आई लव टू हैव ऑल द डिबेट एंड डिस्कशन एंड टेक पार्ट इन दैट। Thank you for your presence મહેશ ભાઈ. કોઈ એવું હોય ને કે 5 મિનિટ પણ કોઈ આવ્યા એ 50 વર્ષો બરાબર છે. I was talking about growth and development because sustainable development के साथ sustainable development goals SDGs भी आए, which is talking about lot of things. There are 17 में. But first and foremost is we are entering a storm of climate change with our limited resources. Am I right? We have our limited resources. Do you all agree with me? Yes. Can I have a big yes? Yes. How can we have unlimited growth in this limited resources? अपने घर में स्टोर रूम है, उसमें इतनी खाना है, इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल मैं बाजार से नहीं खरीद सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है। वो खाने, स्टोर के खाने में जितना सामान पड़ा है, उसमें से 5 जन, 10 जन, 50 जन, 500 जन, चाहे एक दिन में यूज़ हो या एक महीने में यूज़ हो, लेकिन 5000 लोग आ गए तो मैं खाना बना पाऊंगी? We have unlimited resources, but a very limited way to use it. But there are certain resources which are actually limited, which cannot be regenerated. So there is a new concept on economy.
हमारे यहाँ पे अभी आने में देर लगेगी, 10 साल बाद आई एम श्योर our topic of green pillar will be degrowth. Purposely, we all have to understand that we need to slow down, whether it is any kind of consumption. Purposely, consciously, we need to slow down, because sustainability का मतलब ही ये है कि you enjoy whatever resources which are available to you in such a way that you don't compromise the next generation. They don't get it. वो compromise पे हम sustainability की बात नहीं कर सकते. So the way the world is moving today, and that's where I have been privileged to talk to a lot of economics who are talking about degrowth, and luckily my son is also working on the same concept of degrowth. कि how can you have unlimited population, unlimited growth in a very limited resources we have. हमारे लिए वो रिसोर्सेज भले हमारे लिए लगे कि एक हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन हकीकत यही है कि 2050 की अगर हम बात करें तो वी हैव टू टॉक अबाउट स्लोली गोइंग डाउन. सो वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग 1.75% ऑफ द अर्थ. ऑन 28 जुलाई जितना अर्थ प्रोड्यूस कर सकता था, 28 जुलाई को वो प्रोडक्शन का कंजम्पशन यूज हो गया है. That is what I was talking with Kaviji. Can we talk about a very, a topic which everyone needs to understand is Earth Overshoot Day. Yes, please. The concept of Earth Overshoot Day, and I'm sorry, Geetika, I will probably disagree with you in one thing. Okay. It's human endeavor to grow. There's nothing you can change in that. Degrowth is not possible. The only thing that is possible is to consciously work towards better alternatives, not the way we've been doing it. So, by reducing growth, जैसे अगर आप growth को रोकना चाहेंगे, you are going against nature, against the basic human nature is to grow. So, we must first of all understand that the growth will always happen, but yes, the way the growth is happening has to be changed. It has to be redesigned. And when we talk about what day did you just talk about? I'm sorry. Earth World Shootout Day. Okay. So the basic thing that the concept, I'm sure that all of us know about it, but it basically means that whatever you are growing, when are you replenishing it? The date from 1971, which was December sometime, in 2022, it has gone down, it has come to July 28th. Last And time if it you was see- August. Yeah. 3rd August or 2nd August. And if you see the graph, it was during COVID, the 2020, that was the only time when the graph actually went up. Yes. Usko chhod ke baki, it's been gradually declining. Now, I think this is related to consumerism. अगर मैं इसको लेकर चलूँ, it's a greed of the large corporates, which is actually hampering growth. If there are professionals like Vineet works on green things, passive means of architecture. So do we. The very concept, like sir said, that sustainable word हमने add कर दिया है. Now, हम अगर मानकर चलें कि sustainability अब एक fact बन गया है, but if you are really honest about your architecture, if you are really making your buildings the way they should be made by a logical and a scientific method, they will bloody well be green. They cannot be unsustainable. So I think what we should do is, it has to come from the passion. You don't have to think about sustainability per se, but do it the right way. Now, one of the major things that we are working on right now is having self-sustained townships, in which the complete cycle of entertainment, work, socializing, environment, and residential is totally self-sufficient. So if we start working on those kinds of concepts,
where power does not have to be distributed. The power is produced right there. There is no distribution losses. There is nothing. And newer and newer energy sources are being found out. For example, piezoelectric has been on my mind even in 91 when Google was not there. So I used to think कि भाई energy तो आदमी जब चलता है तो लगाते ही हैं. So we put up a proposal about 10 years back to the Delhi government that if you give us New Delhi to the railways basically, in Nai Delhi railway station पे आप हमें piezoelectric tiles लगाने दीजिए. And with the number of footfalls, ISBT हुआ, New Delhi railway station हुआ, the number of footfalls that you will have, you will produce so much of energy that you will probably be giving energy back to the grid after using all the energy that is there. Now, these kinds of technologies are unfortunately not coming through because the GEs and the Schneiders of the world will not survive. They're vested interests. So this is where we professionals have to come in and start working on things where you mentioned the word refuse. You should refuse an assignment in case it's not, it doesn't go with the philosophy that you really think about. If there are, people would say, इसका चलो ठीक है इसमें मेरे को अभी 4 करोड़ रुपया ज़्यादा लग रहा है. Let me use a lower technology. That is where professionals like us have to come in and start refusing projects. We've done that, and quality and such kind of strengths do have benefits in the long run. I agree with you. Since 1998, when we started working, you know, as young boys and girls, me and my husband, हम लोग ने जो काम पे हम जिस तरह काम कर रहे थे, today after so many years we have boho homes for the retail market. We refused कि हम लोग we are not going to have another raw material. हमारा reclaim teak होगा तो सिर्फ reclaim teak होगा, recycled aluminium होगा, चाहिए तो यही है. That's it. So I resonate so well when yesterday, Praveen, I actually saw that entire conversation between you and Kavi on the Vyapar Jagat speakers meet, and I could relate so well. I said, "Ye maza aayega. These are the wonderful speakers that you have given to me. Thank you so much for that." 12:15 was the time because it was supposed to start at 11:15 to close at 12:15. We started a little late, but I will try to compensate with the time, but not with the quality of the sharing by the speakers. So I'll just take one more question to all. Can one person make a difference? And second is sustainability in action in one sentence for you. For me, it is refuse that don't gel with my principles. For you, we can start with, yes, Kavi. Well, you can see one man here. Yes. So he's made a difference. So I would say yes, every person can make a difference. And the other question I would say in sustainability is give more than what you take. That's the shortest way I can describe it. For you, Vinit. I like to connect Lokender ji's thing of Shubh Labh. And the reason I am doing it is that once we get up from this conference, call it the conference or the national meet, the Green Pioneer National Meet, this Shubh Labh has to happen because, you know, the Western philosophy says, I will become a billionaire, but you can be on the roads. Where the Shubh Labh says, even Devdutt has been talking about Shubh Labh in many things, that Shubh Labh का मतलब है कि मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो. So the question is that there is no penalty on Green Tribunal, there is no penalty. So from this platform, I would want that there has to be accountability. That all these things of, again when I come to the thing of consumerism, as you said, consumerism that is only benefiting the industry, Pepsi, car industry, cola, whatever you want is not Shubh Labh. So I would like to, conclude that we must take this Shubh Labh into really Shubh Labh. It should not be just the word, as Lokender ji put it. Madhu, for you. The answer to the first question is a big yes. Only an individual can make a difference. As a young boy, definitely I thought I can change the world. But while growing up, I realized
it's very difficult to change somebody else. And at the late 50s, I frankly realized that the change happens with only me. If I can change myself, things will happen. So as Lokendra said, my house is a zero waste home. We are 4 members, but we don't add any waste to the Pirana. And when I joined the moment he is part of it, the Tree Works, I removed my lawn and converted it into an organic kitchen garden. Now today, at least week में एक बार मैंने खुद उगाया हुआ, मेरे सामने खिला हुआ Yes. वेजिटेबल को खाता हूँ, उसका मजा ले रहा हूँ, ठीक है? So I feel that happiness. So I don't harvest my vegetable, I harvest my happiness by my garden. So that's the difference. And sustainability, the meaning for me, I will not say आपके लिए होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए understanding my necessities is the most important thing. मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन गांधी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और गांधी जी ने जो डिफरेंस हमारे भारत में जो किया उसको बिल्कुल सलाम मानता हूँ, और उसी तरह जीना मुश्किल है, इसलिए लोग गांधीयन बन गए हैं, गांधी दूसरा नहीं आए। तो मैं इतना जरूर करूँगा, मेरे लिए मेरे जरूरी क्या चीज़ है, उस जरूरी